2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजे, डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, honored guests, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to be part of an auspicious occasion of marriage and nikah. MashaAllah, today the ceremony started very promptly. You know, normally I go to places for nikah and they say Imam's at 10 or 12 o'clock, and one place it started at 2:15. So MashaAllah, very, very nice, very prompt, alhamdulillah. And we pray that Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in the gathering. Today is going to be a very short and sweet program. We'll have a short recitation of the Quran. I will announce the marriage, and after this we'll have a short reminder on the etiquettes of the marriage, the importance of the marriage in Islam, why we do nikah in Islam. Then I will ask the father of the bride along with the 2 witnesses to go and take the consent from the bride for marriage. Once her consent is taken, we will also ask the father of the bride to come to the groom and agree with him as well for consent. After this we'll do the khutbah of the nikah, and we will finish off with a short dua for the couple. So let's start off with the recitation of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. That when the Quran is being recited, pay attention, listen attentively, so that you may receive the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. This was a recitation of the Holy Quran, Surah Al-Rum, in which Allah subhanahu wa ta'ala talks about the many signs. And one of the signs that Allah subhanahu wa ta'ala mentions is that He created from yourselves, meaning from amongst us. We know that Allah created Adam alayhi salam first, and then from him He created his companion. And Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. That from His signs is that He created you, and from yourselves mates. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. That you may find tranquility in them, and He placed between you affection and mercy. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Indeed, in this there are signs for people who give thought. And subhanAllah, we are here today to witness the blessed occasion of nikah. And I always ask this question that, look, in all walks of life, people get married. Whether you're Muslim, whether you're non-Muslim, you're Christian, you're atheist, you're agnostic, people get married. And they make many promises at the altar. I promise to love you, to honor you, to cherish you, till death do us apart. And these are good promises. But what's the difference between these promises of people of other faiths or non-faiths and the nikah in Islam? The nikah in Islam is a realization, it is an understanding that I am about to embark on a new phase of life. I'm going to now take on a new responsibility as a husband or a wife. And I am going to make Allah subhanahu wa ta'ala my witness. Look, at the time of nikah, we have the witnesses. In a few moments' time, we're going to be signing the certificate of marriage. Right? And this will be a snapshot of the nikah in time. But actually, at the time of nikah, the verses of the Quran are recited. And when the verses of the Quran are recited, a lot of these verses, they make us contemplate, they make us think and ponder and reflect that actually now I'm going to embark on a new phase of life, and this phase of life is going to be a phase of life where I need to be somebody who is accountable for the responsibility that Allah subhanahu wa ta'ala has discharged upon me of the nikah. And then inshallah we will finish off with a dua. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. Inshallah, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless this marriage. There was a dua of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khayr. This is the dua the
Prophet ﷺ gave to the married couple when they completed the nikah, and it basically means that may Allah unite you both in goodness and khair and bless you in this marriage and provide abundant blessings. We also pray at this time. This is a time that the couple come together. We pray that Allah bless this marriage with taqwa, with understanding, with prosperity, with patience. May this marriage be a means of both the families coming together and strengthening the couple together. We pray that this is a marriage filled with positive, upright communication, kindness, good character, with akhlaq. We pray that this is a marriage filled with many fruitful children, and most importantly, righteous children that the parents will be happy with, and they will be the fruit of the parents' eye. On this day of nikah, we also remember our loved ones who have passed away. May Allah forgive them, may Allah honor them, may Allah elevate their statuses, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant them entry into Jannah for those. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وأهدنا وعافنا وارزقنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. This concludes the nikah for this afternoon. Inshallah, just from the family members, the father, the two witnesses, and the bride and the groom, I received a couple of signatures, inshallah, and then the formalities of the nikah are completed. Jazakumullah khair. Thank you. मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया पिया चल चले बात ले गम खुशी साथ में चली अपना ये घर छोड़ के मिलने हैं आए इतने मेहमान यहाँ बोलूं मैं सबके सामने हो अंगना के अपने मैं परी ले तेरे संग में उड़ चली हो वे मैं चोरी चोरी आवा वे मैं नजरानू भी छुपावा जिन्ने सपने वेखे माही ओ मैं तेरे संग निभावा माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया
चले बांट ले गम खुशी साथ में साथ में चले अब सब तेरे दूर जाना साथ में सारे तेरे संग जाना साथ में चले अब सब तेरे दूर जाना साथ में सारे तेरे संग जाना साथ में तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया। हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया। मेरा हम सफर तू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है। तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया। हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया। मेरा हम सफर तू हो गया। जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है। खुशनुमा है मेरी सुबहें दिल नशी हर शाम है। जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया। लो सफर शुरू हो गया। हम सफर तू हो गया। ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਵਾਂ
दिलों रुस गईयां चावां तेरी यादां च बिखरा मैं दुनिया सजावां सुन वे मैं कित्थे जावां हुण छुप गईयां रावां मैं ते दस्सेआ सी ख्वाबां च तक्केआ सी ले हुण दिन भी नी चढ़ेआ ते दिल च तू मेरे मन च तू जदों ही नी होंदी पास ते तड़पदी रूह ते रवि तू करीब सोनी हले ना तू जा तू ही है मेरा नसीब कदी भी ना जावी दूर सिला दित्ते जिन्ने भी तू मंगदी है तारे मेरी जान कदी भी ना डरी मेरे प्यारे दिल च तू मेरी हसरत तू असी तेरे उत्ते मरदे ने सुनदे नहीं क्यों हुण ते रोज तेनू चांदे चांदे तेरे हुस्न ते मरदे हसी रोज की करिए सजना बोल हाँ तेरे ही झोल ते नचदे सारे तेरे प्यार च करिए की हुण बोल सजना क्या वांगो पुछा मैं एहसास किथे रख देने गल्ला टाल दे ते नाल किवें हसदे ने छड्ड दित्ती मैं उम्मीद सारी दुनिया तो ए भी लोकां दियां गल्लां च फसदे ने नी मैं नी बोलदी आ झूठ मेरे ते तेरा सरूर तेरे उत्ते लिखा गाने सोहणे जजदे ने दिलां दी यारी साडी भी दिलां दा नहीं होए कसूर नाल रहना सी जरूर साडे तेरा ते मेरा कोई और नहीं है दस दत्ता दुनिया नू जदों भी आवे अपने नाल लावे खुशियां नू जदों भी दूर जावे जान साडी कट जावे सजना है तेरे कोल वसना ही चावे मुस्कुरा के ले लेती है साडी जिम्मेवारी नी मैं नी कित्ती कदी भी तेरे तो बदगुमानी तू मेरा यार सी दिल आसमान पार सी दो दिलां दा प्यार सी ओ प्यार ना सी कागजी पर मेरी ख्वाहिश तू मेरी हसरत तू असी तेरे उत्ते मरदे ने बनदे नहीं क्यों तेरे हुस्न चांदे जावे तेरे हुस्न ते मरदे असी रोज की करिए सजना बोल हाँ तेरे ही झोल ते नचदे सफर कठिन था पर मंजिल प्यारी कितना सब्र था इतना जतन था दुनिया सारी देखे हमें बस और नजरें खाती देखो कब से मिले हम पर दिल अब मिले हैं रहने दो जाने दो शिकवे गिले हैं जिस मंजिल पे रवां साथ हो तेरा बस वहाँ खत है जो हमने पढ़े आंसू रुक ना सके बात तो कुछ भी ना थी फिर पता चला ऐसी दिल लगी है तू सोचा जो वही है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम में भी खुशी है तू मेरा अब सभी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है वार दूं तुम पे मैं सारा ज़माना कुर्बान तुझ पे सब मेरा करता हूँ तुमसे मैं आज ये वादा ना होंगे हम फिर जुदा प्यार की इतनी मंजिलें पार है करके हम मिले तुमसे ही किया शुरू तुम पर ही सब खत्म तुम सा नहीं है कोई हूँ मैं बस तेरा
सी दिल लगी